हाँ, रेगुलेशन है 35 एनुअल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। Regulation 35, the listed entity shall submit to the stock exchanges an annual information memorandum in the manner specified by the board from time to time. क्या कह रहे हैं? Annual information memorandum has to be submitted in SEBI format to आप the देखी हो? stock exchange. नहीं, ये कभी मैंने सुना नहीं, मतलब देखा नहीं है ऐसा information memorandum. नोटिफाई इसके अंदर का जो फॉर्मेट है नोटिफाई नहीं हुआ, तो इसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन कभी अच्छा, भी सेबी लेके आएगा। ओके, ठीक तो है, ये सिर्फ फॉर्मेट एक नहीं है, मतलब, अच्छा, एनेबलिंग है, कभी लाएगी सेबी फ्यूचर में, पर भी एज ऑफ नाउ नहीं है। enabling provision. So nothing to be submitted. By SEBI, ठीक है। प्रियंका सर, अभी किसी का सुबह मैसेज आया था, आपने रेगुलेशन 18 में कोरम में 1/3 की जगह 2/3 लिखा है। बोले प्रियंका मैडम ने 1/3 में 2/3 लिख दिया, वहां तो 1/3 था। ओके, आई चेक ऑडिट कमेटी में आई चेक। ओके कर सर, लेंगे, ठीक कर लेंगे। हाँ सर, ठीक है, चल। Yes. रेगुलेशन 36। Regulation 36, documents and information to shareholders. Sub-regulation 1, the listed entity shall send the annual report in the following manner to the shareholders. Soft copy of full annual report to all those shareholders who have registered their email addresses either with the listed entity or with any depository. The hard copy of statement containing salient features of all the documents as prescribed in section 136 of the Companies Act 2013 or rules made thereunder to those shareholders who have not so registered. Hard copies of full annual reports to those shareholders who request for the same. So basically, sub-regulation 1 stating the manner in which the annual report has to be sent. ठीक है, Any person. अभी तो यार ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अभी हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। पीछे हमने पढ़ा था जिस दिन नोटिस भेजना उसके साथ भेजनी पड़ती है कमेंसमेंट और डिस्पैच पे। तो ये बोल रहा है कि कैसे भेजनी है। बोला जिनकी भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उनको सॉफ्ट कॉपी भेजनी है। Okay. ठीक है, लिस्टेड एंटिटी और डिपॉजिटरी, फिजिकल वालों की लिस्टेड एंटिटी के पास रहेगी और डीमैट वालों की डिपॉजिटरी के पास। तो जब भी आपको एनुअल रिपोर्ट भेजनी है तो डाटा इकट्ठा करने के कितनी ईमेल एड्रेसेस हैं आपके पास, उनको आप सॉफ्ट कॉपी में एनुअल रिपोर्ट भेजोगे, तो आपको प्रिंट नहीं करानी है। हाँ। अब जिनकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, सपोज एक कंपनी में 5000 शेयर होल्डर है, 3000 की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, 2000 की नहीं है। जिन लोगों की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है उनको समराइज स्टेटमेंट भेजनी है, हार्ड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट कंटेनिंग द सैलिएंट फीचर्स। तो दैट ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, ये सैलिएंट फीचर्स है समरी फॉर्म में। ओके। दो ही ऑप्शन होगी यहाँ तक, तो आपको कोई फुल एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है ए और बी में। या तो किसी की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, किसी की नहीं है। जिसकी रजिस्टर्ड है उसको आपने ईमेल भेजी, जिसकी नहीं थी उसको आपने समरी भेजी। समरी, ठीक है। और हार्ड फुल एनुअल रिपोर्ट किसको भेजनी है? जो रिक्वेस्ट करे। ठीक है सर, ये वन सेलिएंट फीचर्स मतलब इसका भी कोई फॉर्मेट होता होगा ना? सेक्शन 136 एबीसी वर्जन केवल टू द, ठीक है। अभी एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, जनरली कंपनियां करती नहीं है, या पूरा ही भेजती है। अगर किसी कंपनी के 3 करोड़ शेयर होल्डर हैं तो 2 करोड़ फिजिकल होंगे, तो वो 2 करोड़ को प्रिंट कराने में 100 रुपए कॉपी से 200 करोड़ रुपए लग जाएगा। अच्छा, पूरी एनुअल रिपोर्ट भेजेगी तो उसकी जगह वो छोटी एनुअल रिपोर्ट, एवरेज एनुअल रिपोर्ट भेजेगी। और
लिमिटेड कॉपी प्रिंट कराएगी, जो मांगेगा सिर्फ उसको देगी। ठीक है। ठीक है, अब ये कब भेजनी है एनुअल रिपोर्ट 2 में? The listed entity shall send annual report referred to in sub-regulation 1 to the holders of securities not less than 21 days before their annual general meeting. ठीक है, अब इसकी वर्डिंग और कंपनी एक्ट की वर्डिंग में डिफरेंस है। हाँ, कंपनीज एक्ट का क्लियर वर्किंग डेज है ना। ठीक है, तो हमको किसके हिसाब से जाना पड़ेगा? जो मोर स्ट्रिक्टर प्रोविजन है कंपनीज एक्ट। हाँ, तो क्लियर डेज जाना पड़ेगा। इवन तो यहाँ पे 21 डेज लिखा है, तो आपको 21 क्लियर डेज प्लस अगर फिजिकल दूर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा ऐसा लेना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 21 क्लियर वर्किंग डेज प्लस 48 आवर्स फॉर फिजिकल कॉपी। सर, तो पहले रिपोर्ट इज डिसेमिनेटेड टू बीएससी, फिर डिस्पैच उसी दिन होता है ना? उस दिन है कि नॉट लेटर देन कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि पहले जाए, लेकिन उस दिन जानी है जिस दिन आपका डिस्पैच शुरू हुआ, उस दिन के एंड से पहले जाना। बीएससी को। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ भी लिस्टेड है। ठीक है। अगर 25, 26, 23 3 दिन आपका डिस्पैच चलना है तो 25 तारीख को एक्सचेंज को कॉपी जानी है। ओके। रेगुलेशन 34 एनुअल रिपोर्ट वाले प्रोविजन में था ये। ओके, ठीक है। सब रेगुलेशन 3, in case of appointment of a new director or reappointment of a director, the shareholders must be provided with the following information: a brief resume of the director, nature of expertise in specific functional areas, disclosure of relationships between directors inter se, name of listed entities in which the person also holds the directorship and the membership of committees of the board, along with listed entities from which the person has resigned in the past 3 years, and shareholding of non-executive directors in the listed entity, including shareholding as a beneficial owner. In case of independent directors, skills and capabilities required for the role and the manner in which proposed person meets such requirements. That means अभी अगर आप किसी की अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन नोटिस में डाल रहे हो तो पीछे ये 6 पॉइंट की एक स्टेटमेंट डालनी है जिसमें उसका ब्रीफ रिज्यूम, क्या उसका एक्सपर्टाइज है, उसका किसी डायरेक्टर से रिलेशन क्या है, कितने लिस्टेड डायरेक्टर है, कितनी कमिटीशिप होल्ड कर रहा है, फिर लास्ट ईयर में कौन सी लिस्टेड कंपनी से उसने रिजाइन किया, शेयर होल्डिंग कितनी है उसकी कंपनी में, इवन एज ए बेनिफिट अगर खुद के नाम पे नहीं है लेकिन कॉर्पोरेट के थ्रू है तो एज ए बेनिफिशियरी कितने शेयर होल्ड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो जिस जगह के लिए वो कर रहे हैं उसमें क्या रोल चाहिए और वो कैसे पूरा कर रहा है। ठीक है। Sub-regulation 4. The disclosures made by the listed entity with immediate effect from date of notification of these amendments to the stock exchanges shall be in XBRL format in accordance with the guidelines specified by the stock exchanges from time to time, and to the stock exchanges and on its website shall be in a format that allows users to find relevant information easily through a searching tool, provided that the requirement to make disclosures in searchable formats shall not apply in case there is a statutory requirement to make such disclosures in formats which may not be searchable, such as copies of scanned documents. अभी हम एक्सचेंज में कुछ भी कर रहे हैं या तो XBRL फॉर्मेट में कर रहे हैं या स्कैन वर्जन सर्चेबल वर्जन में करते हैं। तो रेगुलेशन है जिसके कारण हम लोग ऐसा करते हैं कि पर्सनल टू 36(4) बोला एक्सएल जो आप सबमिट करोगे एक्सचेंज के फॉर्मेट में, और जो भी आप एक्सचेंज के वेबसाइट पे चलाते हो सर्चेबल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कहाँ पे सर्चेबल की ऑप्शन नहीं है, अगर कोई एनसीएलटी का होल्डर है तो वो उसको सर्चेबल नहीं बना सकते जो स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपका कवरिंग लेटर सर्चेबल होगा। ओके, तो बेसिकली हमें XBRL में जो सबमिशन करना पड़ता है वो, जो भी PDF में करना पड़ता है, इट शुड बी इन सर्चेबल फॉर्मेट। मतलब XBRL में करना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट वो गाइडलाइन के हिसाब से,
और दूसरा वेबसाइट पे और जो भी आप एक्चुअल अपलोड करोगे स्टॉक एक्सचेंज पे डॉक्यूमेंट वो सर्चेबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट इस रेगुलेशन से है। Sub-regulation 5. The notice being sent to shareholders for an annual general meeting where the statutory auditors are proposed to be reappointed shall include the following disclosures as a part of the explanatory statement to the notice. Proposed fee payable to the statutory auditors along with terms of appointment, and in case of new auditor, any material change in the fee payable to such auditor from that paid to the outgoing auditor along with the rationale for such change. Basis of recommendation for appointment, including details in relation to and credentials of the statutory auditor proposed to be appointed. अगर आप किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आपको नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है। क्या कितनी फीस देने वाले हो, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, अगर नया ऑडिटर है पुराने की जगह पे तो पुराने वाले को जो फीस दे रहे थे और उसको फीस दे रहे थे उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसका रीजन क्या है, रैशनल क्या है, फिर आप किस बेसिस पे रिकमेंड किया, उसका क्रेडेंशियल क्या है। ओके, उसका प्रोफाइल बेसिकली। ठीक है, अब इसको समराइज कर दो। Okay, so 36 talks about how the information has to be provided to shareholders along with documents. So first, it's saying that how do you have to send the annual report either by soft copies if registered email addresses are there, hard copies, and a summary of the annual report if the email IDs are not registered, and any person who asks for hard copies, then you have to dispatch the same. Then there is a provision under the Companies Act which is stricter that says that 21 clear working days before the annual report has to be sent. As per SEBI regulations, it is only 21 days before, so the stricter provision has to be adhered to. In case we are appointing a new director or reappointing a director, then there are certain information which must be given in the notice calling the AGM, such as the resume, the expertise, the disclosure of the relationships, any number of entities where the person is holding the position as director or has resigned in 3 years, any shareholding of non-executive directors as a registered owner or as a beneficial owner, and in case of independent directors, the skills and capabilities. Then it says that information has to be submitted in XBRL format as per guidelines, and in PDF format it has to be searchable. In case where we are appointing any statutory auditors or reappointing an auditor, the notice of the AGM must contain very two important details such as a fee payable and terms of appointment, any change in the fee payable to the old and new auditor, and recommendation for appointing that auditor, credentials of the statutory auditor. 35 annual information memorandum, 36 disclosure to stock exchange. अभी रेगुलेशन 32 पे आ जाओ। Statement of deviations or variations. Regulation 32, sub-regulation 1. एक काम करो, इससे पहले गूगल में निकाल लो ये स्टेटमेंट। अच्छा, statement of deviation, regulation 32 करके BSc। नीचे नोटिस। अच्छा, पढ़ दो एक बार। Aurum PropTech Limited, February 10, 2023, listing department BSc and listing department NSC. Statement of deviation or variation, the use of proceeds of rights issue. Dear Sir, Madam, pursuant to Regulation 32 of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations 2015, we hereby confirm that there is no deviation or variation in the use of proceeds from the objects stated in the letter of offer for rights issue of the company dated April 8, 2022. A statement confirming that there is no deviation or variation in the utilization of these proceeds for quarter ended December 31, 2022, duly reviewed by the audit committee is attached. You are requested to take the same on record. बोलो।
It's raised, ठीक है. Modes of fund rights issue, amount raised, monitoring agency, name, deviation. आराम से करो ना, क्या हाँ, अच्छा हाँ. जल्दी. Name of the entity, mode of fundraising rights issue, date of raising funds 17 May 2022, amount raised 8,588.91 lakhs, report filed for the quarter ended December 31st 2022, monitoring agencies applicable, and name of the agency is Care Ratings Limited. Is there a deviation, variation in use of funds raised? No. If yes, whether the same is pursuant to change in terms of a contract or object for which approved by the shareholders, it's not applicable. If yes, whether the same is pursuant to change in terms of contract or objects which was approved by the shareholders, not applicable. Explanation for any deviation, variation, not applicable. Comments of the audit committee after review, no comments. Comments of the auditors, if any, no comments. Objects for which funds have been raised and where there has been a deviation in the following table. So original object is product development, modified object if any, original allocation on rupees and lakhs, modified allocation if any, funds utilized, unutilized amount in lakhs, amount of deviation variation for the quarter according to applicable object, and remarks if any. So product development उसका original object था, funds have been utilized for that purpose and they have stated amount utilized and funds unutilized. Then product marketing, all funds have been utilized. Identified investments, out of original allocation of 15,670 rupees in lakhs, 4,731 lakhs have been utilized, 10,939 lakhs are unutilized. Funding inorganic growth initiatives and general corporate purposes, 11,387 lakhs have been allocated. Out of that, utilized funds are 1,850 lakhs and 9,536 are yet to be utilized. And they have affirmed that there is no deviation in the utilization of proceeds and there are no remarks. Difference, if any, is due to the rounding of figures to two decimal places. And they've explained what does a deviation or variation mean. So three reasons they have given. If in case one deviates, is the amount, objects or purpose for which funds have been raised, or deviation amount of funds actually utilized as against what was originally disclosed. Change in terms of a contract referred to in the fundraising document, that is prospectus or letter of offer, etc. ठीक है, अब रेगुलेशन पे आते हैं. हाँ. Sub-regulation 1, the listed entity shall submit to the stock exchange the following statements on a quarterly basis for public issue, rights issue, preferential issue, etc., indicating deviations, if any, in the use of proceeds from the object stated in the offer document or explanatory statement to the notice for the general meeting as applicable, indicating category-wise variation, capital expenditure, sales and marketing, working capital, etc., between projected utilization of funds made by it in its offer document or explanatory statement to the notice for the general meeting as applicable and the actual utilization of funds. अब ये क्या कह रहा है कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे जब भी आपने फंड रेज किए, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू से, तो एक स्टेटमेंट देनी है जिसमें आपको डेविएशन दिखाना है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू लिखा था उसके अगेंस्ट में हमने फंड्स में कैसे यूज किया. तो अभी जो आपने स्टेटमेंट देखी उसमें कैटेगरी वाइज आईडी ऑब्जेक्ट दिखाए थे, उसके आगे कितना फंड लिखा था वो दिखाया, फिर ये दिखाया कि कितना यूज किया और कितना बाकी है और कोई वेरिएशन है कि नहीं है. यस, बाइफर्केशन दिया था बेसिकली यहाँ पे. ठीक है. Sub-regulation 2, the statements specified in sub-regulation 1 shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilized or the purpose for which these proceeds were raised has been achieved.
जब तक पूरा पैसा खत्म नहीं होता या पर्पस खत्म नहीं होता, ये आपको डेविएशन स्टेटमेंट देनी है। Yeah. Subregulation 3, the statements specified in subregulation 1 shall be placed before the audit committee for review, and after such review shall be submitted to the stock exchanges. एक्सचेंज को सबमिट करने से पहले आपको ऑडिट कमेटी पे रखनी है। हाँ, जैसे उन्होंने कवरिंग लेटर में भी लिखा था, reviewed by the audit committee. Subregulation 4, the listed entity shall furnish an explanation for the variation specified in subregulation 1 in the director's report in the annual report. अगर आपकी इसमें कोई वेरिएशन है तो आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। हाँ. Subregulation 5, the listed entity shall prepare an annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document, prospectus, notice, certified by the statutory auditors of the listed entity, and place it before the audit committee till such time the full money raised through the issue has been fully utilized. अब वो जो था वो क्वार्टरली स्टेटमेंट थी जो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। ये एनुअल स्टेटमेंट है फॉर पर्पस अदर देन ऑब्जेक्ट्स जो ऑडिट कमेटी के साथ रखना, सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर एनुअली। तो ये भी एनुअली देना है जब तक फंड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड, और वो भी क्वार्टरली देना है। कहाँ पर देना? Quarterly, then both annual and quarterly have to be given till funds have been लिखा है एक मिनट, एनुअल कहाँ? annual statement of funds utilized for purposes other than those. यहाँ लिखा शेल प्रिपेयर, सबमिट नहीं लिखा। क्वार्टरली में लिखा सबमिट करोगे, यहाँ लिखा शेल प्रिपेयर। ओके, नहीं, ऊपर लिखा शेल सबमिट, यहाँ लिखा शेल प्रिपेयर। ओके, शेल प्रिपेयर, ठीक है। Subregulation 6, where the listed entity has appointed a monitoring agency to monitor utilization of proceeds of a public issue or rights issue or preferential issue or qualified institutional placement, the listed entity shall submit to the stock exchanges any comments or report received from the monitoring agency within 45 days from the end of each quarter. लाइक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 100 करोड़ से ऊपर का इशू हो तो मॉनिटरिंग एजेंसी कंपलसरी होती है। अच्छा, वो फंड को देती है, तो जो इंस्टॉलमेंट ऑफ क्वार्टर क्वार्टर के खत्म होने के 45 डेज के अंदर आपको मॉनिटरिंग की रिपोर्ट या कमेंट आए वो एक्सचेंज को सबमिट करना है। इन केस ओके, ठीक है, यहाँ सबमिट लिखा है। more than 100 crore. सेवंथ में लिखा है Where listed entities appointed a monitoring agency to monitor utilization of proceeds of a public issue or rights issue or preferential issue or qualified institutional placement, the monitoring report of such agency shall be placed before the audit committee on quarterly basis promptly upon its receipt. तो जो रिपोर्ट आती है आपको ऑडिट कमेटी के सामने रखनी है। ओके, और रखने के बाद आपको ऑडिट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। हाँ, ओके। Disclose every 7A, where an entity has raised funds through preferential allotment or qualified institutional placement, listed entity shall disclose every year utilization of such funds during that year in its annual report until such funds are fully utilized. अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है तो आपको एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज करना है। ओके, सर सिर्फ यही दो टाइप्स ऑफ इशू के लिए एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है ना? और ऊपर वेरिएशन भी था, ये वेरिएशन है तो डायरेक्टर रिपोर्ट में वेरिएशन देना। हाँ, ठीक है। For the purposes of this regulation, any reference to quarterly, quarter in case of listed entities which have listed the specified securities on SME exchange shall respectively be read as half yearly, half year. That means SME में जो listed है उनको हाफ ईयरली बेसिस पे देना है रिपोर्ट। Yes. ठीक है, समराइज कर दो इसको। So regulation 32, we saw a specimen statement of deviation given by a company. Accordingly, any company which is raising money through a public issue, rights issue or preferential issue has to prepare a quarterly statement. If it has deviated in the use of its proceeds,
and if it has deviated, then it has to show the variation between funds which were projected and funds which have been actually utilized. This statement has to be given continuously till the proceeds have been fully utilized or the project has been achieved. This statement also must be placed before the audit committee, then it must be submitted to the stock exchange. Also, the variation in the use of proceeds must be stated in the director's report. On an annual basis, a statement of funds must be prepared and must be certified by the statutory auditors and placed before the audit committee. Funds for purpose other than. Acha. Utilized for purposes other than those stated in the offer document. So this statement has to be certified by statutory auditors and it should be placed before the audit committee. This has to be done till the money has been fully utilized. Then it says that if a monitoring agency has been appointed, that is where your issue size is more than 100 crore in case of public issue, rights issue, or preferential issue. Any report or comment submitted by the monitoring agency has to be submitted to the stock exchange within 45 days from the end of the quarter. This report also must be placed before the audit committee on a quarterly basis very promptly. Then in case of two types of issue, that is preferential allotment and QIP, every year the company must disclose the utilization of funds in this annual report until the funds have been completely utilized. For any companies which are listed on SME exchange, there is a relaxation. So instead of complying with the above provisions on quarterly basis, they have to comply on half-yearly basis. अभी देखो एक बार केवल 31-32 से लेके 36 से सब हेडिंग पड़ जाए ना. कहाँ से सर? रेगुलेशन 30. 30. 30. हाँ. ये RPT है सारे. एक सेकंड. तो हेडिंग पढ़ दो 30 ये सब. Regulation 30, disclosure of events or information. Read with Schedule 3, Part A and Part B. Part A. इसके अंदर Para A, Para B. Then 31 spoke about holding of specified securities and shareholding pattern. Basically, events filed, shareholding patterns to be filed in XBRL mode. Then 31A spoke about reclassification of any person as promoter or public. With certain conditions as to person seeking reclassification, etc. Then 32 spoke about. ये सब हम करते हैं. हाँ. 32 spoke about statement of deviations or variations, that is companies raising money from the public and if they've deviated in the use of funds, how they must comply. Then regulation 33 spoke about financial results, how the financial results have to be disclosed in SEBI format in case with audit reports, limited review reports, along with modified, unmodified opinion, then what all has to be submitted in SEBI formats. When regulation 34 spoke about annual report, how the annual report is to be prepared, sent, dispatched to the public, what all should be contained in the annual report. Basically, Schedule 5 regulations have to be complied with. Then we spoke about 35 annual information memorandum, which is an enabling provision which will be introduced by SEBI. Till now, there's no compliance for this provision. 36, what all information and documents must be sent to shareholders, and especially in case of appointment or reappointment of directors and statutory auditors, and how this information is to be filed in XBRL and in PDF, which is searchable. ठीक है. अब नेक्स्ट आएगा ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और इसके ऊपर पूरा एक SOP है जो एक साथ करेंगे. ठीक है आज के लिए. ठीक है.